हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एबीसीडी। मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट जिज्ञासा एंड हम वापस आ गए हैं अपनी करियर काउंसलिंग की सीरीज के साथ। एंड आज हमारा है 7th सेशन और हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट मिस यशस्विनी। हाय यशस्विनी, वेलकम बैक टू द चैनल। Hi Jigyasa, thank you so much for inviting me. So good to see you again. So in last session we were discussing about the decision making कि हमें कैसे decide करना चाहिए किसी particular career को लेकर, या अगर हमने job change करनी है तो how to choose अगर हमारे पास कोई equal opportunity वाली 2 careers हैं या 2 job है। So आज हमारा 7th session है और उसका topic है that how to build a habit building and the time management आज का topic है। So without wasting any time, let's start with our session. Okay. So हमने पिछले सेशन में जैसे डिस्कस किया यशस्विनी कि हमें डिसाइड करना चाहिए, हमारे पास इवन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि हमने कौन सा करियर चूज करना है या हमने कौन सी जॉब चूज करनी है अगर हमारे पास इक्वली अपॉर्चुनिटी वाली कोई जॉब्स हो या कुछ। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है कि इफ वी हैव डिसाइडेड फॉर द वन पर्टिकुलर जॉब, इफ वी हैव डिसाइडेड फॉर द वन पर्टिकुलर करियर, so how a student, like my first question is that how can student or how can an employee build a long term habit for that? Okay. Long term habits build करना easy भी है, थोड़ा difficult भी है, depend करता है कौन सी habit आप build करना चाह रहे हैं और क्या वो habit अपने पहले थी आप में या नहीं है, एक बिल्कुल ही नई हॉबी या कोई नई एक्टिविटी आप सीख रहे हैं या नई हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंडिंग। ऑफ कोर्स जो पॉप कल्चर में है वो 21 डेज का इंफॉर्मेशन है कि 21 डेज लगते हैं टू फॉर्म न्यू हैबिट। इट्स नॉट ट्रू, इट कैन वेरी बिटवीन 18 डेज टू अ ईयर। अगर एवरेज हम देखना चाहेंगे तो एटलीस्ट 2 months तो चाहिए आपको टू बिल्ड एन हैबिट, राइट? सो but then how to stay motivated while you're building those habits, that also becomes one thing. And then how to break it down, how to build and not give them up in the middle, तो कैसे कर सकते हैं? So इसमें एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, Atomic Habits by James Clear। पूरी बुक इसी के बारे में, how can you build habits. So according to him, I think उनके जो concepts हैं वो psychology से ही driven है। So what he says is, अगर कोई भी चीज हमको बिल्ड करनी, हैबिट बिल्ड करनी, फॉर एग्जांपल वेकिंग अप एट 6 o'clock, 6 AM इन द मॉर्निंग, राइट? उसकी 3-4 चीजें हैं। एक, आई वांट टू वेक अप, दैट्स द बिहेवियर। व्हाई डू आई वांट टू वेक अप? व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर इट, राइट? नाउ हाउ कैन आई वेक अप? सो व्हाट शुड बी माय स्टिमुलस और माय क्यू फॉर दैट बिहेवियर, एंड व्हाट कैन बी द पोटेंशियल reward or craving for it, right? So उससे लिख के अगर हम ये habit build करना चाह रहे हैं, so say for example if you want to wake up at 6 AM, आप alarm set करते हैं for 5:45 so that you wake up by 6 o'clock, and then you also put 2 more alarms, say around 5:55 and 5:58. So this becomes the cue. Then why do I want to wake up? I want to wake up because I want to work out, I want to be on time for work or for my college, I want to do so XYZ, जो भी चीजें मुझे करनी पूरे दिन में, helps me if I wake up early. So अब ये रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा हो गया है. Let's break it down and simply एक specific reward that if I wake up at 6 AM, this is my reward. I go out, I breathe fresh air, if the fresh air is available in your city, given that city नहीं हो आपकी, I get to view the sunrise, which is very good for my circadian rhythm. So small rewards you can break it into, and then set your behavior for that. Will you be successful every day? No, not possible. Sometimes you might wake up at 6:30 also, but be consistent with it. That's one thing that you can do. Also, if you want to build a new habit, it should not be boring. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह 6 बजे उठ के I have to study. Now that would work if my board exams are there or my end exams are there. But then I have to make it a little attractive also. So how can you make your new habits attractive or easy or very obvious to build and satisfying also? Say for example, if I wake up at 6 AM, I have my coffee in the morning while reading a book or whatever activity that you like, you pair it up with that. So association हो जाएगा behavior का. Make it very obvious, make it doable. If you're waking up at
10 o'clock. Don't set it up for 6 o'clock for the next day. Set it up for 9:30 for the next day. So make it doable and obvious. Easy also. And make it satisfying, make it fun also. It should not be very boring. If you try to build habits जो आपको internally बहुत boring लगती है, वो आपका motivation last ही नहीं करेगा. After a certain point of time, you'll give up also maybe that habit. After that challenge or particular जो आपने take up किया. And third, we can use technology. We can use trackers because आजकल तो हर चीज के लिए tracker है. You can track how much water you're drinking, how much steps you've taken, कितने hours of efficiency है आपकी, कितनी नहीं रही है. So track that. So that becomes instant reward हमारे लिए. Okay, today I completed my 6,000 steps. Or today I completed my to-do list जो थी. I've completed all the tasks. It would be simple, putting a tick mark in your diary or putting a tick mark in your mobile. So making it fun, rewarding, doable, and not like a mountain that you have to climb. Exactly. I have seen so many people, वो चार्ट बना लेते हैं कि आज हमने ये करना है, आज हमने ये कर लिया, या So अभी आपने मुझे बताया कि कैसे कैसे हम हैबिट क्रिएट कर सकते हैं अपनी हॉबीज से लेके, या रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बिहेवियर के लिए, चाहे हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या हम किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इसको साथ चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जब हमारे पास कोई हेक्टिक शेड्यूल हो, ऑफिस जाना है, फिर घर भी मैनेज करना है, फिर अपनी एक हॉबी भी मैनेज करनी है. It is kind of a difficult, So my next question is related to that what are some effective techniques for managing hectic schedules? Okay. इसमें तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि डूएबल चीजें करिए जो कि it's possible for you, not something that your friend is doing and is working for them. Customize it. So one thing can be you divide your day into 4 halves. वैसे भी हमारा day is divided into 4 halves: morning, afternoon, evening and night. So हर half के कुछ activities होते हैं. Even if you're not able to like complete the morning activities, maybe shift it to a different half and try to see that even if आपका morning वैसे नहीं निकला जैसे आपको चाहिए था आज, you make the most of the 3 other halves. So that can be one thing. एक जो बेसिक चीज हम कहते हैं कि जो बड़े टास्क होते हैं उनको स्मॉलर टास्क में आप डिवाइड करो and focus on the small things one day at a time. So if it's a project that you have to do by 22nd of May, start working it on from 1st of May and break it down every day, like this many hours I'll give this project. Prioritize, very important. I think everybody knows जो प्रायोरिटी पे हम उस पे ध्यान देंगे. अगर 100 काम है तो हम फर्स्ट 2-3 है जो आज बहुत जरूरी है वो करेंगे. मॉनिटर कर सकते हैं अपना टाइम. अगेन इसके लिए भी आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं. You might have heard about it, Pomodoro technique, which says कि हर 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए and हर 50 मिनट के बाद I think after every 100 minutes take a longer break. So that way you're not sort of taking on too much pressure also. You're getting small gaps and small rest times as well. That can be one thing. अगर आप boss हैं या you have people working under you, right? Plan your meetings very strategically. हम जैसे for example ये जो we are not every, some meetings could have been an email. Some meetings would have just been a simple WhatsApp text. You don't have to schedule an entire meeting for everyone. And waste their time. So and waste your time as well. So plan your meeting strategically. Set achievable expectations. It's impossible to do 1,000 things in a day. So set achievable. 50 चीजें हो सकती हैं, 1000 चीजें नहीं हो सकती दिन में. Delegate, very important. Ask for help from others. Delegate some tasks that can be done by others, and not just at work but at home as well. You don't need to do everything at home. Keep a central schedule, maybe like weekly to-do list or maybe a monthly to-do list. Of course, अगर आप weekly, monthly list रख रहे हैं तो आप एक everyday planner भी बनाएंगे, वो भी कर सकते हैं. Do whatever feels nice to you. And yeah, last चीज जो है जो हम कहते हैं कि distractions थोड़ा minimize करें, कम मोबाइल फोन सोशल मीडिया यूजेज जो है वो थोड़ा सा कम करें ताकि आपका schedule better manage हो सके. ये कुछ चीजें जो
एक क्या कर सकते हैं, and always like customize it, whatever feels right to you and whatever you can do that. Not everyone will be good with making charts and planning the entire day. Some people like spontaneity, and some people like doing it as it comes. So then for them different technique will work. For them maybe monitoring the time will work. So whatever speaks to you, do that, customize it. Exactly. So you should always, अपने आप को इतना भी hectic नहीं कर लेना चाहिए, so it will affect your mental health as well as your physical health. I think prioritize करना चीजों को, priority पे चीजों को रखना, that is very important. Right. So thank you so much, Shashwini, for the wonderful knowledge, for helping all of us by giving a wonderful tips. So thank you so much. We are done with.